Okay friends, so we have seen nutrition in amoeba. Now we will see nutrition in human beings. Okay, so like amoeba, human beings are also omnivores because its nutrition source is from plants and animals both. Okay, then they are heterotrophs and they are omnivores. Then they are also holozoic. The whole process of digestion takes place into the body, so this type of nutrition is called holozoic nutrition. But unlike amoeba, the human beings are having a proper organ system for the digestion, and it is called digestive system. And this digestive system is made up of many organs, okay, and the digestion, it occur into the alimentary canal, into a into a cavity of body which is called as alimentary canal. And there are various structures which form the digestive system, in which first is mouth. Okay, so mouth, pharynx, stomach, small intestine, liver, pancreas, gallbladder, okay, then the large intestine. These all forms the digestive system in human beings, and they all involve into the digestion. Okay, then first of all we will see the mouth, from where the ingestion of food occurs. Okay, we take our food from our mouth. In this way we ingest the food. Okay, but not only we ingest the food, we chew the food with the help of our teeth and the tongue. So what we are doing? We are chewing the food. In this way what we are doing, we are converting the large particle into the small particle, and in this way the digestion is starting from the mouth only. Also what we have into our mouth? We have saliva. Okay, and saliva is what? Saliva is a secretion, okay, from the salivary gland which are residing in our mouth. And where it is? Okay, so okay, so this is the upper tract of digestive system, in which we are having a mouth. Okay, this is the oral cavity. Oral means mouth. So this is the mouth cavity. In mouth cavity we are having teeth and tongue. Okay, teeth and tongue helps into the chewing and also mixing of saliva into the food. Okay, when we chew our food, what happens? We are having a liquid in mouth, okay, sticky fluid which is called saliva in our mouth, and when we eat our food and chew it, then this saliva mixes into the food, and also it helps into the chewing, because suppose if we are having our dry mouth, then what will happen? We cannot chew our food easily, but this liquid medium, it makes chewing easy. Okay, and also one of the enzyme called amylase, it is mixed into the saliva, and this amylase enzyme, it digested that starch
ठीक है, it digests the starch and it converts starch into the glucose. Okay, so in this way the digestion process is getting started from the mouth itself. Okay, and what I was saying that we are having salivary gland, one which is underneath the tongue, okay, which is called sublingual. Lingua means tongue, sub means under. So the salivary gland which is under our tongue, okay, reside under our tongue, is called the sublingual salivary gland. So this is sublingual salivary gland. So three pair of salivary gland we are having. One is sublingual salivary gland, one which is below the mandible, and so it is called submandibular salivary gland. Mandible is what? Our lower jaw is called as mandible. So this is submandibular salivary gland. One gland is below the ear and at this place it resides, and it is called parotid gland. Okay. So in this way we are having three pair of salivary gland. One is sublingual, other is submandibular, and the third one is parotid gland. And these three salivary glands, they produce saliva, and via opening into the mouth, they release the saliva into our mouth, and when we chew the food, the saliva gets mixed into the food and they form a bolus. Okay, what we are doing when we chew our food and then we swallow the food, it forms into a bolus, and that food which is mixed with the saliva is called bolus. So bolus is what? The food with the saliva is called the bolus, and then we swallow this bolus and it get into the pharynx and then into the esophagus. So now is it clear what we are doing in the mouth? We are chewing the food, okay, then the saliva which is secreted by the glands called sublingual, submandibular and parotid gland, okay, and the saliva has the amylase enzyme into it which digests the starch, okay, and converts the starch into the glucose, okay, and when the saliva gets mixes with the food, it converts the food into the bolus, okay. So then comes the pharynx. The pharynx is the tube-like structure, okay, into the throat. So throat is also called the pharynx, and it is the common passage for the air and the, okay. So if we see, okay, so the pharynx is the common passage for the air and the food. So from here air goes inside and then it passes through the pharynx, okay. The food also passes from the pharynx, okay. So this tube-like pharynx, tube-like structure is called pharynx. It is 5 inches in diameter, 5 inches in length, and as I told you, that's a common passage for food and the air. So what happens is when we swallow the food, so what can happen when we eat food? The food can get into the air passage also. So here what it is, this is a air passage,
and this is the food pipe or food passage. So what can happen when we are eating our food? It can get into the air passage, and if our food particles will get into the air passage, what will happen? It can go into very small bronchi and bronchioles, which are the subdivision of the trachea. So what can happen? It can be closed and we can feel choked. Okay. So what happens is, there is a process, there is a preventive measure for it, and our body automatically we prevent it. When we take the food, there is a projection, cartilaginous projection, which is called epiglottis. It is made up of cartilage, okay, and it is the projection of trachea, okay. Not trachea, sorry, it is the projection of hyoid bone here, and one flap like structure is there. This is the flap like structure is there, okay. This is epiglottis. It is above the hyoid bone, and this epiglottis, it closes the air passage completely when we swallow our food. So next time when you eat food, you will observe that when you swallow the food, you cannot inhale. Why? Because epiglottis, it closes the air passage. So epiglottis does not allow the food particle to get into the air passage, okay. And if somehow any food particle get into the air passage, suddenly you will have a cough reflex and the food particle will be coughed out, okay. So in this way we are having a preventive measure which does not allow the food particle to get into the air passage. So we have seen pharynx, okay. After we chew the food get into the pharynx, and from the pharynx it get into the esophagus, okay. Then esophagus we will read. Okay. Fine. So esophagus is what? It is a tube-like structure. This structure is esophagus, which is a tube-like structure, and it is a muscular structure. It has a muscular wall, and when we take the food, okay, we take the food and it get inside and it passes through the pharynx, then it gets into the esophagus. And what esophagus does, there is a peristaltic movement, there is a wave like movement into the esophagus, which, okay, what it does, जो esophagus है उसका जो peristaltic movement होता है wave like होता है. So जो फूड पाइप होगा उसका इस प्रकार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, एंड इट विल अलाउ द फूड टू गो अपवर्ड, ओके. सो in this way, because of this wave like motion, it allows the food go upward, okay. So not upward, forward, in forward direction. This peristaltic movement of the food pipe, it allows the food go to the forward direction, and in this way the food go into the stomach, okay. So now we will see what happens into the stomach. So the stomach is also a hollow muscular structure, and structure is like this. It is esophagus, and from the esophagus from here intestine start. Okay. So this part is, this organ is known as stomach. Okay. The stomach has two ends. The upward end is called the cardiac end. Okay. The lower end is called the pyloric end. Okay. And
stomach has gastric glands which secrete some gastric juices, and also stomach secretes HCl, hydrochloric acid. So stomach secretes some gastric juices and hydrochloric acid, okay, and it has pepsin enzyme in its gastric juices. Okay, so when the food comes from the esophagus into the stomach, the acid get mixed with the bolus, okay, with the food, and what it does, why this acidic environment is important, this acidic environment it activates the pepsin enzyme. क्या होता है कि जब स्टमक में फूड आता है तो एल्कलाइन होता है, उसका जो नेचर है वो एल्कलाइन होता है, बिकॉज जो सलाइवा होती है वो एल्कलाइन इन नेचर होती है, और जो फूड में जब वो मिलती है तो फूड का नेचर एल्कलाइन होता है। बट जब वो स्टमक में फूड आता है तो जो फूड है उसमें पेप्सिन एंजाइम को एक्ट करने के लिए फूड पर उसे ज़रूरी है कि एसिडिक एनवायरनमेंट हो। ऑल्सो ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है ये कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज, वायरसेस इन्हें डीएक्टिवेट कर देता है, किल कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार एंटीसेप्टिक भी होता है ये, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल होता है। जो एसिडिक है जो एनवायरनमेंट है वो हमें क्या कर रहा है, फूड को सबसे पहले तो एसिडिक है तो उसे क्या कर रहा है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी सेप्टिक इफेक्ट उस पर कॉज कर रहा है। दूसरा जो पेप्सिन एंजाइम है इट वर्क्स इनटू द एसिडिक एनवायरनमेंट, इसलिए फूड को एसिडिक बनाना जरूरी है। तो ये जो HCl होता है ये फूड को एसिडिक बना देता है। दूसरा हमें एक क्वेरी होगी कि भाई जब HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यदि स्टमक में है तो क्या स्टमक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या उसे कोई हार्म नहीं होता इस एसिड से? तो नहीं होता। वाई? बिकॉज स्टमक जो होता है उसकी इंटरनल एक लेयर होती है स्टमक पे, ठीक है, म्यूकस लेयर होती है, और ये म्यूकस लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है स्टमक को फ्रॉम एसिड, और इसीलिए स्टमक को कोई हार्म नहीं होता। लेकिन यदि किसी कारण से ये लेयर स्टमक में से हटने लगे, इरोजन होने लगे इस लेयर का, तो बिल्कुल स्टमक को हार्म हो सकता है, और इन दैट केस स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। ठीक है, तो स्टमक हमने देखा गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है, HCl सिक्रीट करता है, साथ ही पेप्सिन एंजाइम इसमें रहता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्टमक में कौन सा फूड कितनी देर रिटेन करता है ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो इजीली डाइजेस्ट होता है, फास्ट डाइजेस्ट होता है, इसलिए सबसे कम समय कार्बोहाइड्रेट लेता है। उसके बाद प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा समय लेते हैं लेकिन फैट से कम समय लेते हैं। लेकिन यदि फैट है वो सबसे ज़्यादा समय लेती है डाइजेस्ट होने में, इसलिए सबसे ज़्यादा देर तक जो रुकता है फूड स्टमक में रहता है वो है फैट। इसीलिए हम कहते हैं यदि हम कुछ फैटी फूड खाते हैं, रिच फूड खाते हैं, तो समटाइम वी फील हैवीनेस इन आवर स्टमक। वाई? बिकॉज जितना हैवी रिच फूड हम खाएंगे उतना ही स्टमक को उसे डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, और इसीलिए वी फील हैवीनेस इन आवर स्टमक। ठीक है, सो दिस इज द वर्क ऑफ स्टमक। फ्रॉम द स्टमक द फूड get into the intestine. So now we will see the work or function of intestines. Okay friends, तो हमने देखा stomach. Now we will see the intestine. Intestine is the large
largest part of the human digestive system, and it is larger into the animals which eats upon the plant source like cow and deer, and which needs to digest the cellulose carbohydrate present into the plant sources. Okay. So, it is larger into the animals which eats upon the plant sources. Okay. Okay. So, in the herbivorous it is larger, and into the carnivorous it is smaller than the herbivorous. Okay. But still it is the largest part of the digestive system in animals and in human beings also. So, after the pyloric end, okay, one more thing is, if we know that the food remains in the stomach until it get digested, and there is a valve like structure, at the pyloric end which is closed until the food gets digested. At this valve is called pyloric valve, and it does not allow the food to go into the intestine until and unless the food gets digested properly. Then what happens? The food comes into the intestine, Okay. So, in this way the intestines are there. There are two types of intestine, small intestine and the large intestine. When the food comes into the small intestine, it has three parts. First part is called ileum, second part is called jejunum. Okay. 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 Sorry, first part is called duodenum. Okay. This is the duodenum part. First part is called duodenum. Jejunum and ileum. Okay. This part is called then ileum, the last part. Okay. In the jejunum, the juices from the pancreas and the gallbladder and the liver get secreted into the small intestine. Okay. Now we will see, okay, like in this way the stomach is there, and here is the pancreatic gland. Okay. And here is the pancreatic duct which get open into the jejunum. Also, here is liver, and here is the gallbladder. Okay. And there is a common bile duct is formed from the liver and gallbladder, and this common bile duct, okay,
this is the common bile duct, this is gallbladder. Gallbladder secretes bile juices. Then this is pancreatic duct. Okay. So now you can see this is the liver. Okay. Below the liver, the gallbladder is there. Then there is a common bile duct which is carrying the secretion from the gallbladder and the liver, and then it is getting open into the jejunum. This part is jejunum of intestine. Okay. And this is pancreatic duct. Pancreas secrete various enzymes which digest the proteins and fat. Okay. Now what is going on? The food is coming into the intestine. Okay. And intestine has duodenum, jejunum and ileum part. ठीक है. इलियम पार्ट में क्या हो रहा है, सॉरी जेजुनम पार्ट में क्या हो रहा है, जो बाइल जूसेस हैं जो कि कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा सिक्रीट किए जा रहे हैं, रिलीज किए जा रहे हैं किसमें, जेजुनम में. तो बाइल जूसेस आर रिलीजिंग फ्रॉम द बाइल डक्ट इनटू द जेजुनम एंड पैनक्रिएटिक जूस आ रहा है जेजुनम में, जो कि किसके द्वारा सिक्रीट किया जा रहा है, जो कि सिक्रीट किया जा रहा है पैनक्रियास के द्वारा. ठीक है. इस प्रकार बाइल जूसेस और पैनक्रिएटिक जूसेस जेजुनम में सिक्रीट हो रहे हैं, और जब फूड स्टमक में से होकर जेजुनम में से गुजर रहा है, डिओडेनम जेजुनम में से गुजर रहा है, तो जो ये जूसेस हैं बाइल जूसेस और पैनक्रिएटिक जूस, ये क्या कर रहे हैं, ये उसमें मिक्स हो रहे हैं और जो फर्दर डाइजेशन है फूड का वो ये कर रहे हैं. अब इसमें से बाइल जूस क्या करता है, अब जो फूड स्टमक में से आ रहा था वो किस मीडियम में है, वो है एसिडिक मीडियम में, लेकिन जो बाइल जूस है वो उसमें मिक्स होके क्या कर रहा है, अल्कलाइन बना रहा है. ठीक है. साथ ही जो बाइल जूसेस हैं वो फैट के साथ मिलकर सोप लाइक सब्सटेंस बनाते हैं और फैट के स्मॉल ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं. ठीक है. और इसके साथ जो पैनक्रियास में एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, वो क्या कर रहे हैं, इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स पर काम कर रहे हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर रहे हैं और जो है सिंपलर कंपाउंड्स में उन्हें ब्रेक डाउन कर रहे हैं. ठीक है. ठीक है. साथ ही फैट का जो डाइजेशन है वो जो पैनक्रियाज में लाइपेज एंजाइम होता है, ये जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो रहा है इसमें लाइपेज एंजाइम होता है. लाइपेज एंजाइम जो है वो फैट को जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है उसे क्या कर रहे हैं, उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं. साथ ही पैनक्रियाटिक जूसेस में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन का जो है डाइजेशन करते हैं. ठीक है. तो इस प्रकार क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन में जब फूड आया है तो पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जूसेस के द्वारा डाइजेशन किया जा रहा है उनका. दूसरा जो इलियम होती है, ठीक है, अब चूंकि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है वो फूड का हो चुका है, नाउ इट्स टाइम फॉर द एब्जॉर्प्शन. और एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, इंटेस्टाइन के द्वारा. सबसे पहले जो फूड डाइजेस्ट कर लिया गया है स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ लिया गया है, जैसे कि अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लूकोज. अब टाइम है कि उन्हें इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए. तो जो इंटेस्टाइन होती है उसकी जो सरफेस होती है इंटरनल, उसमें बहुत स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें कि माइक्रोविलाई कहते हैं. ठीक है. और ये माइक्रोविलाई क्या कर देते हैं, जो इंटरनल इंटेस्टाइन है उसके सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देते हैं.
अब क्या होता है कि जब फूड यहाँ से होकर इलियम में आता है तो ये काफ़ी लॉन्ग होती है, ताकि जब फूड इसमें से गुजरे तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन का जो है एब्जॉर्प्शन हो सके। तो जो इलियम पार्ट होता है उसे एब्जॉर्प्शन होता है फूड का मेनली, और यहाँ की जो इंटरनल सरफेस होती है उसमें विलाइज होते हैं, इन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। और इन माइक्रोविलाई के कारण क्या होता है कि सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है और यहाँ से जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है फूड के उनका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जब एब्जॉर्ब हो गया है फूड तो वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला गया। ब्लड में कैसे चला गया कि इंटेस्टाइन जो रहती है वहाँ पे ब्लड की भी सप्लाई है बहुत सारी, ठीक है, वेन्यूल्स हैं। तो जब वेन्यूल्स वहाँ से ब्लड ड्रेन करेंगी तो क्या होगा, जब वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएंगी वेन्यूल्स तो साथ में जो एब्जॉर्ब फूड है वो भी वेन्यूल्स में आ जाएगा, ठीक है। और जब वेन्यूल से कलेक्ट होके ब्लड हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड सभी सेल्स में जाएगा, तो वहां से फूड जो है वो सभी सेल्स को मिल जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार इंटेस्टाइन के द्वारा क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है बाय इलियम एंड विद द हेल्प ऑफ सीलियास या माइक्रोविलाइज के कारण, ओके। देन व्हाट हैपन्स आफ्टर द एब्जॉर्प्शन happen, okay, completed, what is going on from the small intestine, food is entering into the large intestine, okay, and large intestine has 4 part: cecum, colon, rectum, anal canal, and the orifice is known as anal orifice or anus. Now what is going on? Now most of the food particle, very important food particle are getting absorbed from the ileum, then the remaining food is going into the large intestine, and large intestine का जो main function है वो क्या है, into the large intestine, okay, I will write here. So into the large intestine क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हमने देखे, कौन कौन से पार्ट हैं, सीकम, कोलॉन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीकम और कोलोन में क्या हो रहा है, अब जो फूड है वो मोस्ट ऑफ द फूड पार्टिकल जो इम्पॉर्टेंट फूड पार्टिकल हैं जो हमें चाहिए, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड जो प्रोटीन्स हैं वो एब्जॉर्ब हो गए हैं, और अब जो फूड है उसमें ज़्यादातर वाटर है। तो जो वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन जो है वाटर का लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और यदि किसी कारण से लार्ज इंटेस्टाइन में डिसऑर्डर हो, फंक्शनिंग या कुछ इन्फेक्शन हो, तो क्या होता है, बहुत वाटरी जो है वो मोशंस होंगे और लूज जो है मोशंस होंगे, डायरिया भी कह सकते हैं उसे हम। तो कोलोन में यदि कोई डिसऑर्डर होता है, डिजीज होती है, द स्टूल विल बी वेरी वाटरी, बिकॉज जो लार्ज इंटेस्टाइन है वही वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है, और वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। यदि वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वी विल फील डिहाइड्रेटेड, ठीक है, क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन से। देन व्हाट हैपेंस, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इट कंटेन अराउंड 400 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, डिफरेंट वेरिएंट ऑफ बैक्टीरिया, एंड व्हाट दीज बैक्टीरिया डू when the food comes forward, the waste material, now we can say it is the waste material, and we don't need it and we need to expel it. So after the water absorption, the food come into the rectum and colon and then rectum, and here what these bacteria does, they breaks down the food particles in more and more simple form, and then this waste material comes into the rectum and then into the
anal canal, and then it is expelled from the anal orifice time to time. Okay. So, and this is called feces now. Okay. So, feces is formed by the working of bacteria also. So, these bacteria are very important. These are called colon bacteria, and they digest the remaining waste material which reach to the colon. Okay. So, in this way the digestive system is in the human beings, and it is formed of the mouth, okay, where we chew the food and mix the saliva and digest the starch. Then it comes into the pharynx, where the epiglottis closes the air passage so that the food particles don't get into the air passage. Then it comes into the esophagus, where the peristaltic movement or wave like movement of esophagus, it slides down the food forward. Okay. Then it comes into the stomach, where the stomach secretes the gastric juices and the acid, hydrochloric acid, which makes the food acidic, and it kills the bacteria and other microorganisms. Then it contains the pepsin enzyme which digests the food and food particles. Then the food comes into the jejunum, duodenum and jejunum, where it gets mixes with the bile juices and the pancreatic juices. Bile juices, what it does, it makes the food alkaline, where the enzyme lipase get activates and it digests the small globules of fat. Then other enzyme trypsin and chymotrypsins are there which digest the protein into the food. Okay? Then the food reaches to the large intestine, where the most of the water gets absorbed, and there is around 400 variants of bacteria into the colon which digest the waste material or remaining food particles, and then this digested remaining food particle comes into the rectum and then into the anal canal, and time to time it gets expelled. Okay. So, in this way the ingestion, digestion, absorption and assimilation and digestion occurs into the digestive system of human being. Okay. So, we now know one of the life process which is very important for the life, and which is nutrition. Now, we will see another life processes which are very important for a living organism to be alive. Okay. So, we will then see in the next session.